Hey guys, Beast again from Geek Guys. So पिछले महीने जो है I bought this phone. ये है iQOO 3. So इसको मैंने buy किया था like for 18,000 something after the exchange of phone और उसके discounts के बाद. So this phone has the main selling point of that it has a flagship processor of the 2020. So ये था Snapdragon 865 के साथ and it was under 40,000 rupees जब ये रिलीज़ हुआ था. This is the 4G वेरिएंट. इसका एक 5G वेरिएंट भी था बट दिस इज़ द वेरिएंट जिसमें कि 5G जो है वो डिसेबल्ड है एंड दिस इज़ 8GB एंड 128GB. सो इसकी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी. सो इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट गो चेक इट राइट अप देयर एंड एज यू कैन सी देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स हेयर. सो मैंने काफ़ी मतलब जैसे बोलते हैं इंटेंसिव टेस्टिंग की है and if you like this kind of intensive testing reviews, so why not stick around and subscribe to my channel. So that is enough of the introduction for this device. So let's get started with the review of iQOO 3. So to begin with, हर एक डिवाइस की एक अच्छी चीज़ें होती हैं और बुरी चीज़ें होती हैं. सो पहले जो है मैं इसकी जितनी भी बुरी चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ. आफ्टर दैट आई विल कंक्लूड माय रिव्यू कि क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए फॉर द प्राइस एंड आर द शॉर्ट कमिंग्स इनफ टू अवॉइड दिस फोन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स विद अ केस. एज यू कैन सी दिस इज़ द केस बट मैंने जो है इसके ऊपर एक स्वॉम्प टाइप की, लेट मी जस्ट क्लीन द लेंस कवर. सो मैंने एक स्वॉम्प टाइप की जो है वो एक स्किन इस पे लगाई है. सो इट लुक्स रियली गुड. So overall it is a really heavy device, so that is kind of a con. और जो है it is quite bulky. आप यहाँ देख सकते हो it is heavy device है. It is over 200 grams और बैटरी भी इसकी ठीक ठाक बैटरी बिकॉज इट इज़ अ 4400 mAh बैटरी. सो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है. जो इसके सबसे बड़ा कॉन जो मेरे को लगता है दैट इज़ द सॉफ्टवेयर. द सॉफ्टवेयर ऑन दिस डिवाइस albeit इट इज़ रनिंग द लेटेस्ट एंड्रॉयड. ये एंड्रॉयड 11 पे सिक्योरिटी पैच भी आई थिंक सो मार्च का इसमें सिक्योरिटी पैच चल रहा है. But there is enough bloatware for like days and days. So there were a lot of apps that were by default installed on this device, but मैंने manage किया almost like 70% of them I have removed, but still there is 30% जो कि मतलब वो भी मेरे को bug करता है. But that is something to keep in mind with going with these cheap devices, especially with MI, Vivo, Oppo, Realme. आप किसी भी device के साथ जाएंगे, they are doing these kind of things. And the second thing, द लॉन्चर ऑन दिस थिंग यू कैनॉट चेंज द लॉन्चर. लॉन्चर को मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसमें ट्राई की. आई ट्राइड द पिक्सल लॉन्चर दैट आई एम शूटिंग फ्रॉम द LG G8. आई एम रनिंग द पिक्सल लॉन्चर फ्रॉम द डे 1. बट इस डिवाइस के साथ इट इज़ लाइक क्रैशिंग ऑल द टाइम. इसके ऊपर मैंने क्लिप्स वगैरह आई विल बी लाइक शोइंग यू क्लिप्स. यहाँ पर आपको क्लिप होगी. सो दिस इज़ लाइक आई ओपन एनी ऐप. सो अब जो है ये नेटिवली जो है जो लॉन्चर खुल रहा है इट इज़ द मेन डिफ़ॉल्ट लॉन्चर. बट अगर मैं अब होम जाता हूँ तो इट विल ओपन द पिक्सल लॉन्चर and now it has messed up the recents again. But agar if I go to the home it will go to the native launcher and the gesture seems to be working just fine as you can see. बट अगर मैं ऐसे होम जाता हूँ इट विल गो टू द पिक्सल लॉन्चर. सो इट इज़ कॉन्स्टेंटली क्रैशिंग और आपका जो नेविगेशन बार इट विल बी मेस्ड अप. आई गॉट अ लॉन्चर इट इज़ कॉल्ड द CPL लॉन्चर. सो ये काफ़ी स्टॉक जैसा लॉन्चर है. इट हैज़ ऑल द थिंग्स लाइक द गूगल पेन एंड एवरीथिंग. सो मैं अपने एंड से एक जो है कस्टमाइज्ड होम स्क्रीन रखता हूँ सो दैट आई हैव ऑल द एप्स इन माई एक्सेस ऑल द टाइम. सो वो इट ऑल्सो क्रैशेज. सो दिस इज़ अ रियली पेन. और when you are playing games or you are using the phone in landscape like this, अगर आप वीडियो भी देख रहे हो, so if you scroll down the notification shade there is no place that you can see your notifications, especially क्योंकि I am a big music freak. तो मेरा साइड में जो है नोटिफिकेशन के साथ जो है म्यूजिक प्लेयर इट इज़ ऑलवेज देयर. सो हमेशा से आपको वहाँ जो म्यूजिक है इट विल ऑलवेज बी शोइंग द म्यूजिक प्लेयर एंड you cannot see the notification. So ये उनको एक UI में थोड़ा चेंज आना चाहिए था so that the person can also see the notification. It is good that you are getting the music player there, but there should be a way to see the notifications also in the like landscape mode. The sound out of this speaker has like shrillness. मतलब जो आपकी साउंड है वो 60% वॉल्यूम पे ही डिस्टॉर्ट होनी शुरू हो जाएगी एंड इट इज़ लाइक रियली हॉरिबल. इफ़ यू आर वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो और यू आर प्लेइंग अ गेम इट इज़ लाइक अनप्लेबल ऑल द टाइम. सो आपको हमेशा से इट विल यू विल ऑलवेज ब्लॉक द स्पीकर. सो आपकी ऑडियो वैसे ही नहीं आएगी. बट इट इज़ स्ट्रेट अप क्रैप फॉर इवन लिसनिंग टू म्यूजिक. दैट इज़ द बिगेस्ट कॉन फॉर मी ऑन दिस डिवाइस. आई हैव सीन सम बजट फोन्स दैट हैव
better speaker than this one. So that is a really downer for me. So display was one thing that I never thought कि इस device में issue आने वाला है, because it is an OLED panel, और OLED panel अब जो Chinese manufacturers BOE वगैरह से जिससे source करते हैं, so those manufacturers have become so मतलब इतने वो production level पर पहुंच चुके हैं that their OLED displays are really great and you cannot complain about that. But इस device में पता नहीं एक weird सा I don't know what it is wrong with my device or something, but अगर आप low brightness पे जाते हैं and if you are seeing some dark scenes तो आपको एक पर्पलिश सा ग्रेडियंट मिलेगा. आई विल अटैच सम स्क्रीनशॉट्स हेयर. मैंने बार बार अपने दूसरे डिवाइसेस के साथ भी इसे कंपेयर किया विद द ओलेड डिस्प्ले. S9 के साथ भी मैंने कंपेयर किया, G8 के साथ भी कंपेयर किया, बट दिस वॉज द ओनली पीस दैट वॉज शोइंग दैट ग्रेडियंट. सो मेरे को लगा दैट इट इज़ अ इशू, और फिर मेरे को वो काफ़ी जगह दिखा. सो इट इज़ डेफिनेटली अ इशू विद माई मॉडल और ईदर विद द पैनल दैट दे हैव सोर्स्ड. सो दिस फोन इज मेनली फोकस्ड टुवर्ड्स गेमिंग. And gaming is nowhere a bug or a downer for this phone because it has a 865, so performance is like top notch. But जब भी आप games play करते हैं, and if I was playing PUBG, so अगर आप PUBG ऐसे on करते हो, so it will like straight up give you that it is gone into the game mode. So the game mode is like, you see, I have turned out the gestures, so एक ही gesture में I'm out of the game. So this is not blocking the gestures. So I have the Airtel SIM on this device. So अगर इसमें जैसे Airtel वगैरह का अगर मेरा डाटा डायरेक्ट होता है, so it gets a pop-up message on the display. It cannot block that. और मेरे को हमेशा से it always exits my game and I am shown like I am playing my game and suddenly there is a pop-up on my screen that your data balance is this. This is not blocking that. Even when I have turned the gaming mode. तो उस गेमिंग मोड का फ़ायदा ही क्या हुआ इफ़ इट इज़ नॉट एबल टू ब्लॉक द नोटिफिकेशंस एंड अदर थिंग्स. सो गेमिंग मोड जो है इट इज़ लाइक देयर आर फ्यू थिंग्स कि आप अपना ट्रिगर्स वगैरह मैप कर सकते हो. आई हैव नॉट यूज दैट ट्रिगर्स वेरी मच बट दे आर फंक्शनल इवन व्हेन आई हैव लाइक पुट अ like it is a thick lamination that I have put, so उस skin के बाद भी the triggers are working just fine. But the game mode should be polished by the update, और actually this is in the mid life क्योंकि अब इसमें already एक बड़ी Android update आ चुकी है and iQOO के 2 डिवाइसेस आने वाले, iQOO 5 Neo और iQOO 7 आई थिंक सो Legend और समथिंग, वो आने वाला है 5G 888 के साथ. सो मेन फोकस जो है मेरे हिसाब से कंपनी का अब उस पर शिफ्ट हो जाएगा, बट लेट्स सी इफ द कंपनी कंटिन्यूज एंड इम्प्रूव्स दिस डिवाइस ओवर टाइम. बाकी थोड़े बहुत ग्लिचेस तो सब डिवाइसेस में होते हैं. सो आई हैव सीन सम ग्लिचेस वेयर इट हैज़ लाइक रैंडमली रीबूटेड और लाइक क्लोज एन ऐप. And main thing, this phone has 8 GB of RAM on the base model. So इस डिवाइस में 8 GB of RAM है in the base model and 128 GB internal storage. I have a LG G8X and I like straight up complained about it having 6 GB of RAM in the review. But उस डिवाइस में I have like stayed like PUBG was opened for half an hour in the background and it was still in the system. इस डिवाइस में if you quit the game for 5 minutes it's off. जबकि मैंने इसकी मेमोरी जो देखी है इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज लाइक 3 to 3.5 GB इज़ ऑलवेज फ्री ऑन दिस डिवाइस. सो जितना भी मैं इसे एक्सटेंसिवली यूज़ कर लूँ, रैम इज़ ऑलवेज अवेलेबल 2.5 GB तो मिनिमम इट इज़ ऑलवेज फ्री ऑन दिस डिवाइस. सो दैट इज़ वन थिंग कि मेमोरी मैनेजमेंट जो है थोड़ी इन्होंने एग्रेसिव की हुई है. आई डोंट नो दैट इज़ फॉर बैटरी मैनेजमेंट और समथिंग बिकॉज बैटरी लाइफ ऑन दिस डिवाइस इज़ लाइक स्ट्रेट अप अमेजिंग. That I'll talk to you in detail afterwards. But जो memory management it should be like a little loosen up. One more thing with the iQOO UI, जो इनका iQOO UI है उसमें इतनी ज़्यादा customization है that your head will spin seeing the amount of customization that this device has. और especially इसमें एक जो है AI की और या इनकी जो smart key है वो भी present है. But that key alone does not have any kind of customization. आप सिर्फ इसको Google Assistant इन्वोक करने के लिए कर सकते हो या इनका जो भी असिस्टेंट है उसे आप इन्वोक कर सकते हो या इससे मैक्सिमम डबल क्लिक करके आपकी Google फीड आ जाएगी. That's it. आप किसी को ऐप के लिए कन्फिगर नहीं कर सकते या कैमरा शॉर्टकट या शटर के लिए you cannot do that. So that is a really weird thing क्योंकि that is same like having a Bixby button on my S9 क्योंकि उसमें भी कोई customization नहीं है. Without using a third-party app, you cannot like use this key for any other purpose. Even with this device having so much customization, they have not customized that AI key. Next thing, इसमें एक shake वाला gesture है जिससे अगर आप अपना phone को shake करते हैं, like if it is on the lock screen, so आपका जो torch है वो जल जाएगा.
but the gesture should also turn off the light, but it doesn't. So if it is turning on the light, और वैसे भी ये डिस्प्ले बंद होने पे नहीं काम करता, so you should be on the lock screen. So आपको तब जाके ये शेक करोगे, then it will turn it on. Then you have to go unlock the device, then pull the notification shade और torch को off करना पड़ेगा. Or you can wait for the timer that is set for 5 minutes. That is really annoying. If I can turn it on, why cannot I turn it off like this? So this device comes with a 55 watt charger, जो कि ये iQOO का charger है. As you can see, it is like a big boy charger और इसकी pill shaped cable है. This charges up the device like in minutes because it is a proprietary thing, क्योंकि इनका 55 watt जो है इनकी proprietary charging है. So if you try on other chargers, so मेरे पास ये एक charger है, that is the MI's Qualcomm quick charger that I bought in like 2017. So इस चार्जर को अगर मैं इस फ़ोन में प्लग इन करता हूँ, so the charger it will turn on charging, then it will disconnect, then it will turn on charging. So ये बार बार जो है on off चलता रहेगा and it is not going to charge at all. So that is really one thing कि ये जो है एक चार्जर और केबल स्पेसिफिक भी है ये फ़ोन. The main thing for using Type C is that it will get universal because I have this SSD. And it is blazing fast on this. और आप इस केबल को यूज़ नहीं कर सकते for fast data transfer because it is capped at USB 2.0. USB 2.0 is like painfully slow. I plugged in this SSD with the cable supplied. This is the SSD's cable, and a 400 megabyte file was transferred to the phone in like a zap. Because that is how much faster the UFS 3.0 storage is. But इस केबल के साथ मैं डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ. I have a like bunch of cables और me turning all my things into Type C is one thing कि मैं एक Type C ecosystem में आना चाहता हूँ, that I should only have one cable and my clutter is resolved. But this straight up does not use any other cable. So that is one annoying thing with this device, that it is charger specific as same as the S9 that I have. That is also very choosy about the cables. And one more thing, ये एक supplied case है इसके साथ. So whenever you are going to plug it in the charger, so ये हमेशा जो flap है, it is always hanging. So या तो आपको इसको एक हाथ से पकड़ के रखना पड़ेगा and it will be like hanging like this and then it's like this. It's always up there. या तो आप फिर इसको आप ऐसे नीचे कर सकते हो and then the phone will not lay flat और आपका जो फ़ोन है हमेशा से ऐसा रहेगा. It is like standing on that flap or something. मेरे हिसाब से I should just rip it out. But it protects the Type C port, so there is that. You have to sacrifice something. So this is something that I really like to use a wireless charger. So there is that. It is not. I know it is nitpicking, but I like wireless charging, so it is not there. So back there, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें 4 कैमराज हैं. So these cameras are really the biggest gimmick of all time. So it is using the ultra wide for macro and the main sensor for the 2x telephoto. So these 2 cameras are really just there for showing off. This is the biggest downfall of this device, that these 2 cameras are really just there for show purpose. They do not serve any purpose. अगर आप इन दोनों को कवर भी कर देते हो, this phone is not going to affect its photography or videography. But the video output from this device is like very grainy, क्योंकि जो video है it is not well processed, so it is like hit or miss. यहाँ पर photographs के आपको samples भी मैं दे दूँगा. So the front camera is also like on par, मतलब ठीक है, but it is not something special. And one very annoying thing about this device कि आपकी अगर कोई भी आप ऐप में वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, it will apply that AI skin smoothing on your face every single time. It is forcefully on this device और आपको settings में जाके एक ऐप के लिए उसको disable करना पड़ेगा because it has forced enable on all of those apps. और यहाँ पर पंच होल की बात करता हूँ. So this is a very small punch hole. यहाँ पर आप देख सकते हो it is very small, but there is a silver ring around it. That is like really annoying. If you can minimize something, why not minimize it? This is the same thing that the Samsung has done with their A52, I think so. उन्होंने भी यहाँ पर एक ring लगा दी to show that it is a budget device. So that was a lot of cons of this device. So actually I have like extensively used this device, or I have like paid money for this. So I want to share my views on this. So अब इसके जो pros हैं उसके बारे में बात करते हैं. So the biggest pro of this device, the 865. The performance on this device is like insane. कोई भी आप गेम इसमें रन कर सकते हो at highest graphic settings and it will not give out a sweat. 8 1 बचा है.
एक बचा। Marked a location. So the max temperature that I have seen on this device with very extensive gaming, like for hours and hours, that was 40 degrees Celsius. That is quite acceptable for that long time. I was running PUBG, I was running like Generation Impact and World of Tanks. It handled like a champ. I was screen recording the whole time and recording quality भी काफ़ी अच्छी थी. And one thing I have noticed कि मैंने यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर इंस्टॉल की हैं to check out the things. So जो डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट है यहाँ हमेशा जो है 62 हर्ट्ज यहाँ पर शो होती है. If I open any of the apps, so it shows 62 hertz. And actually when I have gone into developer options और वहाँ पर frame rate का option है, वहाँ पर भी मैंने enable किया तो 62 hertz आ रही थी. So this display is clocked at 62 hertz. Not that it makes a difference, but it is higher than 60. So high refresh rate I really miss on this device because the hardware is more than capable enough to run at like 120 or 144 hertz also. So that is missing on this device. And the main thing about this device, it has 180 hertz of touch sampling rate, जो कि इसकी refresh rate से 3 times ज़्यादा है. And especially while you are gaming, you will notice that it has like very sensitive touch areas. और यहाँ पर अगर आप कुछ भी use करते हो, so it is going to respond like really quickly. I have noticed it while playing simultaneously on 2 devices. So मेरे को पता लगा that it is very responsive. So there is that कि touch sensitivity काफ़ी अच्छी इस device में and it is really good for the gaming. So battery इसकी 4440 mAh की है और 55 watt का जैसे कि यहाँ पर charger already हमें मिला हुआ है. So it charges up really quickly and the idle rain on this device is really good. When I first got this device, I was playing PUBG for like 2.5 hours and the battery dropped only like 35 to 40%. I was amazed because I always play on smooth extreme settings. So उस पर भी it was running like with no glitches at all and it was like buttery smooth all the time and it was cool. Like this device was not even caring that it is running some graphic intensive games. So that is how much horsepower the 865 is giving this device under the hood. So talking about the fingerprint scanner is really great on this device. It works like 9 out of 10 times. So fingerprint scanner is really good. It is miles apart from the LG G8X that I have. So not just the processor but the other components are also fast. So जो RAM है वो DDR5 है. The storage is UFS 3.0 that I showed you that it is like really crazy amount of storage. So even if you are taking a picture or you are just opening a video or something, it happens instantly. So I think so earpiece जो है वो काफ़ी अच्छा है और इसमें अगर वो थोड़ा और कुछ अगर इसमें इंजीनियरिंग अपनी कर सकते थे so it would have been a really great stereo speaker. At least ये छोटा सा जो है वो low frequencies निकाल सकता था but they like straight up abandoned it. But for call quality it is more than enough. The headphone jack is really great on this device. I use this LG earphones, ये भी काफ़ी अच्छे थे. I use this behemoth of a headphone. So ये Razer के मेरे Kraken Pro V2 हैं. These were like working really great. The bass output was really amazing. I was enjoying music on this. So for music experience, it is really good. और आपको hi-fi audio DAC already इसमें embedded है. So that is also one great thing that this device has. So मेरे हिसाब से the construction quality is really good और it is like quite narrow. अगर आप कोई और devices से compare करते हैं, so it is a narrow display. So you have to make sure that you like a narrow display. So it is narrower than most of the devices. Or especially when I'm switching from this to the LG G8X or the S9, so it like noticeably it is thicker, but it has the bigger battery and bigger performance to match it, so I'm not complaining about that. And the buttons too, these are made up of metal, so ये काफ़ी tactile है and it like feels clicky enough. और काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलता है इसकी वाइब्रेशन मोटर. इट इज़ रियली गुड. बाकी आई डोंट थिंक सो दैट आई हैव पर्टिकुलर थिंग्स टू हेट अबाउट दिस डिवाइस अदर देन द UI bugs or something, or especially the camera gimmicks. Because if a company has 2 cameras, just straight up show कि मेरे पास 2 cameras हैं. It is one is the ultra wide, one is the main sensor, same as the LG G8X. But this is like it is showing that मेरे पास यहाँ पर 4 sensors हैं and these 2s are like really crap. They are like even I don't know if they are even connected to the motherboard. So these are some things that are annoying about this device. But बाकी I think so if you can get it like under 22 or 24, you should really get this device. You are not going to regret your purchase, especially with the 865. It is going to rock your world. So guys, this here concludes the video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, please make sure to like and subscribe to this channel. This has been Beast from Geek guys and hope to see you in my next video. Thank you guys.